Good morning students, I hope you all are doing well at your places, and today we'll be studying about nouns ka possessiveness, that is belongingness. So let's just begin with this. Title of our chapter is the noun, that is possessive case, right? You have to write the following sentences in possessive case. Goggles of an old man. आप लिख सकते हैं old man goggle. You can write over here old men's goggles. Right? Hostels of girls it's of course girls hostels. Right? Pages belong to this book, that is books pages. Now you have learned in the previous classes that if the possessor is a person or animal, अगर कोई भी possessor animal या फिर person होता है, then at that time we generally use the apostrophe s. But if the possessor is non-living, तो we generally use of. हम क्या करेंगे, off करेंगे. जैसे books pages नहीं, pages of book ऐसा भी लिख सकते हैं. You can write over here, it is pages of book. Right? Now here we will be studying other ways to use the apostrophe s. Now apostrophe s is used with the singular noun having life, जिनमें life होती है means वो living. जैसे अमित lives in uncle's house. अमित जो है अपने अंकल के घर में रहता है. Beggar का strength has gone. He is not at all that much powerful. Second is only apostrophe is used with the plural nouns having life, जिनके साथ life होती है, and it is ending with s, and of course it is giving some hissing sound like शोभित lives in boys hostel. Boys already s है, इसके बाद सिर्फ apostrophe लगाएंगे. Don't disturb me for goodness sake. Please मेरे को बिल्कुल मत disturb करो. Right? Apostrophe s is used with the plural nouns life ending not ending with s, जिनके साथ s नहीं आता. Is there is any children's hostel in your city? आप देखिए s नहीं आएगा यहाँ पे. Right? Is there is any women's hostel in this town? क्या इस town में कोई women's के लिए hostel है? Apostrophe s is used with the last word in the names of titles में noun having more than one word. Right? The Maharaja of Ajmer Palace is of course is grand, बड़ा है. अमेरिका की गवर्नमेंट्स ऑर्डर इज इग्नोर हो चुके हैं. एपोस्ट्रोफी एस इज नॉट यूज विद लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं होता है. जब भी एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट होता है, इट इज पर्सोनिफाइड एंड ऑफ कोर्स इट इज डिग्निफाइड, देन एट दैट टाइम वी यूज एपोस्ट्रोफी एस. जैसे कि नेचर लॉज आर जस्टिफाइड, अर्थ का ट्रेजर बहुत बड़ा है, दे आर इमेंस. एपोस्ट्रोफी एस इज यूज विद द नाउन्स व्हिच आर एक्सप्रेसिंग व्हाट टाइम स्पेस एंड ऑफ कोर्स वेट. वी शैल एंजॉय अ वीक्स हॉलीडे इन मसूर, कि हम एक हफ्ते का हॉलीडे सेलिब्रेट करेंगे मसूरी में. एंड सम रनर्स दे आर एट दी डेज मैच, की मैच में है. एपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड इन सम फ्रेजेस आल्सो, जैसे फॉर मर्सी सेक मींस भगवान के लिए. एट वन विट्स एंड मींस किसी की इंटेलिजेंस. एट वन फिंगर एंड्स मींस उसके फिंगर टिप में. अ बोट्स crew, it's a kind of a phrase only. So possessive is mainly used when the noun denotes some living thing, किसी भी living thing को denote करते हैं. And when the noun does not denote without life, that is non-living, the possession is generally used by this preposition, that is of. जब भी non-living it's of, otherwise apostrophe s. जैसे the legs of the chair, right? Chair's leg, ये गलत है. The pages of the book बिल्कुल ठीक है, the book's pages एकदम गलत है. A short recap to show the possession of a person और लिविंग बीइंग, हम क्या यूज करते हैं, एपोस्ट्रोफी. इफ द नाउन इज प्लूरल एंडिंग विद एस, तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी यूज होता है. एंड इफ द नाउन इज नॉन लिविंग, देन वी विल यूज द preposition ऑफ. वी विल बी डूइंग द एक्सरसाइज. यू हैव टू राइट डाउन द possessive ऑफ दिस. द क्राउन ऑफ द किंग, आप लिख सकते हैं द किंग्स क्राउन. राइट? द शॉप ऑफ द मिल्कमैन, इट्स मिल्कमैन्स शॉप. The cat of Reena's cat, रीना की बिल्ली है वो. The dog of Sachin, आप लिख सकते हैं Sachin's dog. The cock of Lucky, of course it's Lucky's cock. The toys of these children, of course it's children's toys. The gift of Tom, it's Tom's gift. The name of my father, it's my father's name. You have to change the possessiveness into plural. जैसे कि mother साड़ी, आप लिख सकते हैं साड़ी of a mother.
Brother's trouser, it is the trouser of a brother. Friend's letter, that is letter of a friend. The bird's egg, that is eggs of the bird. Toys of the boy. Dolls of the girls. यहाँ से भी आप दा हटाइए, right? You can remove it. Sister's bangles is of course the bangles of sister. Bangles means chूड़ियाँ. Grandfather's stick is of course the stick of grandfather. Now you have to complete the following sentences using the words which are given in this brackets and of course in the possessive forms. My friend is sitting in the manager's room. अब आप देखिए in the, okay, I shall not attend the party. I shall not attend William's party. देखिए विलियम वो है, क्या बोलते हैं, it's a proper noun, that's why W is capital. Okay. Parents, my car, my parents car. आप देखिए ऐसे लिखिए माई, एक तो एम कैपिटल इसलिए आएगा क्योंकि ये कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इट्स द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस आप लिखेंगे माई पेरेंट्स, ऑलरेडी एस आ चुका है इसलिए ये होगा, राइट. आई शैल गेट माई सन एडमिटेड इन अ बॉयज हॉस्टल. देखिए बॉयज में ऑलरेडी एस है इसलिए हमने ऐसे लगा दिया. डैश इज ब्रोकन, leg of this the leg of this chair is broken. The police knock at the door of my house. At the, आप लिख सकते हैं yes, at door. This is my uncle's. Robin is dash. Robin is Tom's uncle. देखिए अगेन इट्स Tom कैपिटल आएगा क्योंकि वो क्या है, प्रॉपर नाउन है. Where is Tina's wrist watch? Again T कैपिटल आएगा. And what is a wrist watch? We all know, जो कलाई में बांधने वाली होती है. The spelling of this word, आप T कैपिटल रखेंगे अगेन क्योंकि सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है. The spelling of this word is wrong, right? So that was all about possessive case. Please go through this, very important. Learn all the rules and keep smiling and stay blessed. Thank you.